going to start standard 11 class students for bio. My topic is a study of diversity in living world. Yesterday I discussed about the diversity and living world. Now discuss the study of diversity in the living world. This concept, the concept of systematics. What is systematics? Systematics, the Greek words. Systematic, the Greek word systema means the order or sequence. Systema means order or sequence. Defined. What is the systematics? Defined. Systematic is defined. The science of study of organisms in the evolutionary context. The systematic is the defined. The science of diversity. Science of diversity of organism in evolutionary concept. Evolutionary context. Science of diversity. Now, the systematics have four fields. Now, the systematics have four fields. First is identification. Now the second is classification. Third is nomenclature. And last is taxonomy. The systematic, I have four fields. Identification, classification, nomenclature, and taxonomy. Explain one by one and write down. Now have the four field: identification, classification, nomenclature, and taxonomy. The systematics, the main scientist is Simpson in 1961 described the definition of systematics as the deal with study of diversity of organism की डाइवर्सिटी को स्टडी किया और जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया that is called, the scientist name Simpson. Now another terms is a biosystematics. Biosystematic is another term, another field of systematics. Systematic के other जो fields हैं, that is called biosystematics. Deal with the variations with species के साथ variation लिया, that is called
biosystematics. Biosystematic is another field of systematics, deal with the variation with a species. Now, next is identification. Identification, the aim at the finding the correct name and the proper positions of organisms को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, ये उसका प्रॉपर नेम देना और उसका प्रॉपर पोजीशन ज्ञात करना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन है, पहचान करना, उनका करेक्ट नेम क्या है और उनका पोजीशन क्या है, किस में आते हैं. नाउ द सेकेंड टर्म इज क्लासिफिकेशन. Second term is a classification, that the aim at finding the correct name and proper sequence of an organism. अब ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंस में रखना, ग्रुप में रखना, हायरार्की पोजीशन में रखना, उनको क्लासिफिकेशन करना, फाइलम किंगडम ये सब में क्लासिफिकेशन करना, फाइलम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, इस तरह की क्लासिफिकेशन करना, इस तरह की हायरार्किकल ऑर्डर में रखना, सीक्वेंस में रखना ऑर्गेनिजम्स को, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. Classification is defined as the aim at finding the correct name and proper position of an organisms. That the examples is what is 1.2 millions type of animals and 0.5 million type of plant. इतने प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है, उनका पोजीशन लेना है, एक साइंटिफिक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनको साइंटिफिक ऑर्डर में बनाना है, हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स, इनको ग्रुप्स में रखना, इतने को पहचानना, इनको क्लासिफिकेशन करना, इनको ग्रुप में रखना, दैट इज classification. Now the next, nomenclature. Now the next is nomenclature. Organisms, that like find the organisms world में 1.7 to 1.8 million, 1.8 million represent distinct species. ये distinct species है और distinct species differ from one another, that is called biodiversity. And with the variations, यदि उसके अंदर variations है, with species, nomenclature, उनका नामकरण करना, उन organisms का अच्छे तरह से नामकरण करना, that is called nomenclature. Nomen means name. Nomen means name and gallery means to call. Nomen means name and gallery means to call. Nomenclature, नाम से पुकार, that is called
nomenclature. That is the two types. Generic name, specific name. Two types. Nomenclature have two types. First is generic name. Second is specific name. Generic name is the genus. A specific name is a species. That's if so, the frog. The example is Rana tigrina. The Rana means to genus. Tigrina means to species. That is the nomenclature. The nomenclature is IUCN कोड जो हम वर्ल्ड मार्केट में देखेंगे और इसका नामकरण जो वर्ल्ड में भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड से भी जानेंगे। एक नामकरण दिया गया जिसको जूलॉजी के अंदर जो है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट के अंदर जो आएंगे botanical nomenclature. So that is the nomenclature. Now next topic is, noted it. Now start the well-defined definition of nomenclature. The nomenclatures have two types. The first type is common name. Common name, and the second type is scientific name. Scientific name. The common name is, or other name is vernacular name, or vernacular name. Scientific name is binomial nomenclature. Binomial nomenclature, that is two types. That the generic name and a specific name. A specific name. Generic name is genus. A specific name is species. Now the common name and vernacular name. That examples is rose in England. Example, the rose in England, gulab in Hindi, and gulab in Bengal, and Rajapa is Tamil Nadu. Now the second examples, that is the butterfly in English, तितली इन हिंदी। दैट इज द अलग अलग नेम होते हैं। जैसे बटरफ्लाई कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उससे हम तितली कहते हैं, बांग्ला में उससे हम प्रजापति कहते हैं, और तमिल में इसे हम वन्ना थू पोची कहते हैं। तो अलग अलग नेम, अलग अलग नाम सभी जानवरों के रीजनल लैंग्वेज होते हैं। कॉमन नेम हो गए, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम एंड वर्नाकुलर नेम। जैसे रोज कोई इंग्लिश नेम है रोज, हिंदी में इसे गुलाब कहेंगे, और बांग्ला में इसे गोलाब कहते हैं, और राजप्पा इसे तमिल में कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक इरेज करना है, दैट इज now the second topic is, next topic is binomial nomenclature. Next topic is binomial nomenclature. Bi, bis means twice, bis
means twice. Name means name. Name means name. And calorie means to call. To call. Binomial nomenclatures is the scientific naming of organisms. Scientific naming of organisms was developed by Carolus Linnaeus in Carolus Linnaeus in 1751. The book published by the Philosophia Botanica. Philosophia Botanica in 1751. Now the next 10th edition books is published in Systema Nature. Systema Nature published in 1753. Now the other books is published in Species Plantoria. Species Plantrum. in published in 1753. Philosophia Botanica में सारे साइंटिफिक नेम जो होते हैं प्रस्तुत किया गया। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया और साइंटिफिक नेम फिलोसोफिया बोटेनिका में अपने बुक्स में दिया। आगे चलकर एनिमल का साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टमा नेचर में प्रस्तुत किया। प्लांट का उसने स्पीसीज प्लैंटनम में 1753 में पब्लिश किया। Now the scientific name or the technical name of a species. Technical name of a species. Two words. The first word and the second word. First word is the generic name and the second word is a specific name. A species, identify a species, identify genus. That the examples is in human. The scientific name is Homo sapiens. The Homo means genus and sapiens means species. Other जो होते हैं example is tiger. The scientific name is Panthera tigris. The Panthera is genus and tigris is species. Now the third is lion. The example is scientific name is Panthera leo. Panthera is genus, Leo is a species. Now in the plant, the mango. Here is put. In the plants, mango. Mangifera indica. Mangifera is the genus, indica is a species. Now the scientific name and आगे चलकर modify हुआ and next trinomial nomenclature. Trinomial
nominal nomenclature. Genus, species and subspecies. That the examples is human, Homo sapiens, sapiens. then ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर आया जिसमें जेनस स्पीसीज एंड सब स्पीसीज हुआ जैसे ह्यूमन होमो सैपियंस सैपियंस जैसे एस्केरिस ह्यूमन राउंड वर्ड का हुआ एस्केरिस लुम्ब्रोक्वाइडिस ह्यूमनिस the trinomial nomenclature is the codes of. Now the next topic is the code of binomial nomenclature. The code of binomial nomenclature आया जिसमें ICBN International Code of Botanical Nomenclature is published in 1961. ICBN International Code of Botanical Nomenclature. Next, ICZN International Code of Zoological Nomenclature published in 1964. Third, ICBN International Code of Botanical Nomenclature, Bacterial Nomenclature published. Next, ICVN International Code of Viral Nomenclature, and last is ICNCP International Code of Cultivated Plant. इस तरह के कोड नंबर आए, साइंटिफिक नेम आए ताकि वर्ल्ड में भी इसका नाम जान सके और दैट इज द कोड ऑफ बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर ताकि इंटरनेशनल मार्केट में भी ये नाम हम पढ़ सके और ये नाम जान सके. नाउ द नेक्स्ट इज Now the last topic is a taxonomy. Taxonomy is the branch of science which deal with the study of identification, classification and nomenclature. Taxonomy is the branch of science which deal with the study of identification, classification and nomenclature. The father of taxonomy is Carolus Linnaeus. The father of taxonomy. Father of taxonomy is Carolus Linnaeus. Now that is two terms, taxon or the taxa. Two terms, taxon or the taxa. Two terms. Taxon is the group of similar technical related individual. A group of similar technical related individuals. All the insects, that is called taxon. All the plants, that is called taxon. But the taxa is the category. Taxa is the category. Taxa is the category. The examples, a sponge has taxon. The phylum is the Porifera. Related to Porifera, and the taxa is the category of phylum. A sponge, example, a sponge
sponge have a taxa. A sponge have taxon porifera. But the category is taxa. Phylum taxa. Next examples. The taxon of birds is a breach. The category is taxa is class. ए बीज किसमें पाई जाती है? क्लास में पाई जाती है. स्पंज फाइलम में पाई जाती है, तो फाइलम इसका टेक्सा और टेक्सॉन हो गया आपका द ग्रुप ऑफ सिमिलर टेक्निकल रिलेटेड इंडिविजुअल. जय हिंद.